this Q&A at the very end or at the end of each panelist's presentation? I think we took it towards the end. Okay. Okay. So around 7:30ish. Yeah, roughly 7:37. Yeah, 7:30. Okay. So I'll rejoin around that time. Yeah. Mute करेगा हाँ पूरा And I understand I got a message, Apoorva Bhai from Lokendra Bhai, that he's going to speak in Hindi. Yeah. कोई पण He भाषा say in the में beginning के भी Hindi, English, Gujarati is all Yeah, fine. yeah, it's fine. Okay. So we can start now. Thank you, Chitrakshi. Let me start then. भाइयों बहनों, friends, colleagues, brothers and sisters. It's my honor and a privilege to welcome you to the 121st episode in the webinar series that INHAF is organizing for the past few years. This webinar series is appropriately called Rethinking City. As many of you know, we have had over 500 experts, professionals, specialists, community groups, and concerned citizens from all over the world who have presented their views, perspectives, and solutions on something like 30 to 40 important urban themes. And this includes things like governance, finance, mobility, climate change, infrastructure, slums, housing. As I said, that a large number of these issues have been discussed. I'm particularly delighted to be interacting with you people today, as there has been a long gap in restarting this webinar series after we completed 120 webinars. I think it's something like there's a gap of almost 3 months, if I remember correctly. And this gap has been so long that a friend of mine called Michael Slingsby, who follows this webinars sitting in Cambodia, called me day before to say if we had forgotten about this webinars and whether we have stopped doing this platform. And I said, no, we are not. We are really getting ready again. And therefore, while conveying my regrets to those who are missing this webinars, let me share some good news that we are unfolding some 20 new webinars in the coming few months. 20 new webinars in the next 3 to 4 months. And these webinars are very diverse. It includes a series of 5 webinars on an incredibly versatile slum improvement project in Orissa. And it's so good that it's showing the way to deal with the slum problem creatively in our cities. What is being done in big cities and small towns of Orissa has such potential for adoption and replication in other cities of the country that we are calling this webinar series Slums Are Solvable. The second series, that also 5 webinars, we are doing with an organization called CityNet. CityNet is an association of Asian cities with over 150 members and is there for last 30 years, and have been involved with CityNet for a very, very long time. This webinar series, which are 5, is focusing on climate change issue, and it will share what big cities of Asia, such as Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul, Yokohama,
and Kathmandu are doing to address the formidable climate change they are facing. We hope to learn a great deal out of this webinar series. We are also putting together this new series called Gujarat, Cities of Gujarat. And we are not only doing the cities of Gujarat, we are doing the cities of Maharashtra, cities of Tamil Nadu, cities of Karnataka, and cities of West Bengal, also Maharashtra. And in the coming few months, if you put all this together, there's a plethora of webinars which are taking place under the webinar series, Rethinking City. But even though I'm telling you all this information, I'm not telling you why we are doing this webinar series. Why have we been doing this for such a long time, for so many years? What are our objectives? What do we hope to achieve? And to answer this question, I thought the best way would be to share a letter that I addressed to the Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs. I don't know whether you know them, but he was an officer in Gujarat before he got placed in Delhi. And I wrote to him that we would like you, with your team, to share your perspective on India's urban challenge. I requested the Secretary to come on the webinar series and share with us what is your and his understanding of India's urban challenge, and what are government's views on the challenge in terms of how is the country prepared to address the urban challenge effectively. Now, let me kind of tell you what is the nature of the urban challenge, and this is what I continuously go on saying when these webinars happen. I've really asked 5 or 6 questions to the Secretary. Are we ready to absorb properly over 350 million people who would be in our cities in the next 25 years? India is going to have 350 million more people in cities by 2050. And the question is, are we prepared to have them? Second question that I'm asking is this, that in the next 25 years, we are going to construct more in our cities than we have done in the last 80 years. Are we going to be able to build it in such a way so that we do not add to climate change issues? So that's the second question. I'm also asking that the climate threat has a very special connect with the urbanization and cities. How is the country preparing for it? I'm saying, will slums disappear in the next 15 or 20 years? I'm also asking that there is an estimate, there's several committees which estimated it, that in order to kind of address urban India's infrastructure gap, we require to invest something like $640 billion. $640 billion in the next 20 years. Now compare that with what we did. We had a program called JNNURM, Jawaharlal Nehru National Urban Reconstruction Mission, under which over a period of 10 years, we invested only $14 billion, that to huffing and puffing. So issue and the question that one is asking is, do we have the capacity not only to have the resources, but even invest those resources? And we also saying that it's not that nothing has happened. We know that 12 million houses have been built under Pradhan Mantri Awas Yojana. We know thousands and thousands of toilets have been built. We also know that large
amount of investment has happened under smart cities, all that we know. But is this adequate? Is this enough to address India's daunting urban challenge? So this webinar series that we're learning for last 3 years is to take the urban challenge to people. It is not an empty rhetoric, and it is based on a conviction that India's urban challenge is very formidable, and meeting it is not possible by any single agency. Neither the government alone cannot do it, people alone cannot do it, institutions alone cannot do it. Meeting the urban challenge in a manner which will deliver good, livable, sustainable, and people-friendly cities requires a broader societal partnership. Broader societal partnership, and all actors and stakeholders must get together to contribute to the process of meeting this challenge. And this particular effort that we are putting together for last 3 years is a very small contribution to that particular process of building up a societal partnership. Therefore, with this very long introduction, the reason I'm taking a little long is this, that we are coming back to this webinar series after a long time. And I thought it was very important for me to kind of tell people that we're back with a bang, and we do mean a business, and we're going to kind of conduct series of them. So with this introduction, I want to hand this over to Apoorva Bhai and a remarkably resourceful panel. We have been able to put it together. But before Apoorva Bhai take over, let me kind of take one more minute and introduce Apoorva Bhai Oza, who is moderating this webinar today. That he is currently, Apoorva Bhai is currently the global lead in charge of agriculture and climate for the Aga Khan Foundation, which is AKF. And his role is to provide thematic, technical support to country units, also long-term strategic thinking, and building partnership in sustainable agriculture, water management, and climate resilience. So he is completely cut out for this particular webinar. And with this small little introduction, also to tell you this, that before he joined AKF in May 2022, Apoorva Bhai was the CEO of AKRSP, that's Aga Khan Rural Support Program, under which 3,500 villages were covered in all kind of developmental activities. With that sort of an introduction, let me hand it over to Apoorva Bhai to conduct this very interesting session. Thank you. Thank you, Kirti Bhai. I think I agree with you. It's a fascinating panel. And, it's said that in India, if you want to solve any problem, you will need a combination of Samaj, Sarkar, and Bazaar. And amazingly, we've got Samaj, both the what we call the people or the practitioner Samaj, but the reflective Samaj in Dr. Mercy is there. So the contemplative part of the Samaj, the academia. Then you have Vijay is there from the Sarkar. And then you have Bazaar, and I'm not sure Pavan Bhai fits in Bazaar or Samaj, but he fits in both. But Utsav Pandya and Pavan Bhai, in a way, bring in the Bazaar part of this. So we've got a panel which is both Samaj, Sarkar, and Bazaar, and I'm sure, therefore, it'll be a very fascinating thing. The second thing I'd just like to add before we start with the speakers is that this is a language agnostic webinar. So some of us will speak in English,
some of us will speak in Hindi/Gujarati, and I think in Ahmedabad, આ બધું ચાલશે. એટલે આપણે બધું જ, થોડું Hindi, થોડું English, થોડું Gujarati, we'll try everything, right? And I think as long as the speakers are comfortable, I think we can understand what's being said. Also, another part we'll just like to add is that Ahmedabad is a very diverse and complex city. About 20-25% of it is slum, and Kirti has talked about the whole slum problems. So the water issues we will talk today, a lot of the case studies are about where middle class housing is there and there also there are enough water problems. But we are dealing with that set of problems, which is also very substantial. But there is a whole unique set of problems and much more critical, I assume, for those in the southern part or the eastern part of Ahmedabad where there are slum dwellers. And that's, Kirtibai tells me, that's something we'll take on later on, because that's also an important issue. And we may have we'll have a webinar later on the set of problems they are facing and many cities like them are facing. So having said that, what we'll do is we'll start off with Haragovin Bhai and Tulsi Bhai. So these are both speakers who will talk about, in a way, a case study of a Sumay housing society and how the problems they had, how they've addressed it. And it is both what we call working on technical parts, but it is also a lot on behavioral change parts. So I think we'll look forward to that. Let me just introduce Haragovin Bhai. Haragovin is also, he was my colleague for a long time in AKRSP, and he has what 3 decades of experience in rural development, water sanitation, community mobilizing, a whole range of work which he has done. And he's worked in NGOs. He's also worked with a government organization called WASMO for quite some time. And he is done a trainer. So he has a range. He wears many hats. He's also the director of Vasundhara Foundation. He does a lot of freelance work, training, consultancy. But one of the major hats he's wearing here in this seminar is that he is right now the chairman, and he was earlier the secretary of the Sumay Members Association. And what he did as a citizen and as a resident of that society, he and Tulsi Bhai did, I think that is the story we'll look forward to. Tulsi Bhai is also a very unusual person. He's a lawyer in the High Court of Gujarat. He also comes from a farming background. So he's an awareness of the environmental issues which farmers face, but he also has a legal angle to the whole thing. And therefore, he's very passionate about spreading legal awareness and telling people about their legal rights from an environmental perspective also. So they make a very good team. Tulsi Bhai is currently the secretary of the Sumay Members Association. So I think without any further ado, let Haragovin Bhai please come in, at Tulsi Bhai. You all work out and start doing the presentation. Yeah. Yes, okay. Thank you, Apoorva Bhai. खूब सरस आ सेमिनार में हमने आज तक मળી रही है. आई थिंक हिंदी में बात करेंगे तो और लोग भी जो भी हिंदी है तो उसके साथ कम्युनिकेट प्रॉपर्ली हो जाएगा. तुलसी भाई थोड़ा आप शुरुआत करें और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं. तुलसी भाई आप बोलिए, मैं स्क्रीन को वो करता हूं. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. जो हमारी सोसाइटी में है, मेरा इंट्रोडक्शन तो जो अपूर्व भाई ने दे दिया है. अभी जो हमारी सोसाइटी में पहले प्रॉब्लम था, सोसाइटी जो है वो जो बिल्ट हुई थी 1992 में, एंड इट वाज बिल्ट बाय बकेरी ग्रुप. एक मिनट तुलसी भाई एक मिनट હું સ્ક્રીન શેર કરું છું. આઈ થિંક બધાને દેખાય છે? હા બરાબર છે. હાજી યસ ફાઇન, દેખાય છે. યસ ઓકે ઓકે ફૂલ સ્ક્રીન કરી નાખો. યસ યસ હા યસ ઓકે. તો અમારી સોસાયટીમાં 96 યુનિટ છે. વી હેવ 96 યુનિટ્સ ઇન અવર સોસાયટી ઇન 4 blocks. Currently there are 82 units are occupied by the members, and average members in the society residing is 2,000
2010 टू 2030। अब हमारा जो प्रॉब्लम था इसमें वाटर का, पहले यूसेज बहुत था। इसके बाद जब हमने 2005 से जो शुरुआत किया था कि ये जो ज्यादा वाटर यूसेज होता है तो इसका क्या हम सॉल्यूशन लाए, तो ये जो है हमको जो अ, ये जो मीटर जो है वो इंस्टॉल करने का हमको जो इंस्पिरेशन मिला और जो हमको फर्ज पड़ा, इसका पीछे का मेन रीजन ऐसा है कि जब हम सोसाइटी में वॉक करते थे तो जो भी ड्रेनेज लाइन थी इसमें पानी सतत कंटिन्यू चालू ही रहता था। आप रात में जाओ, दिन में जाओ, कोई भी टाइम जाओ, जो ड्रेनेज लाइन में है ना, पानी जो है सतत कंटिन्यू ऐसा लगे कि चालू ही रहता था। तो इसके हिसाब से जो है वो वाटर का जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो वेस्ट होता था। इसके बाद हमने 2005 से जो है वो मीटरिंग सिस्टम चालू करने का हमने चालू किया, लेकिन इसमें काफी बाधाएं आई। धीरे धीरे करके हमने जो है वो इसमें सेमिनार किए, सब मीटिंग्स की, हरगोन भाई ने काफी मेहनत की इसके लिए, सोसाइटी में जो है वाटर सेव करने के लिए। उन्होंने 4 से 5 बार तो जो है मीटिंग भी किया। तब जाके 2019 में 2019 में सबका जो है वो अप्रूवल मिला, सोसाइटी की एजीएम मिली, इसमें भी जो है वो रिजोल्यूशन पास हुआ कि मीटर सिस्टम जो है लागू करते हैं। 2019 में हमने जो है वो किया, बाद में हमने जो चालू किया इसके लिए जो प्लम्बिंग ये सब है, तो जनवरी 2020 से चालू किया था। और वो सब जो सिस्टम लगाने के बाद हमने नवंबर 2020 तक जो है वो फ्री में पहले देने का चालू किया, क्योंकि सिस्टम जो है उसको चेकअप करने के लिए कि भाई सिस्टम जो अच्छी तरह से वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है। इसके बाद हमने नवंबर से चालू किया। तो जो इसमें पहले हमारे लिए जो वाटर सप्लाई फैसिलिटी थी सोसाइटी में, इसमें हमारे पास जो एक अंडरग्राउंड टैंक थी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी एक कनेक्शन था। तो इससे हम जो है, लेकिन हमारा जो बोरिंग का जो बिल आता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो काफी बहुत आता था। पर मंथ जो है मोर देन 60,000 जितना आता था बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सिस्टम, मीटर सिस्टम। तो आप जो है इसमें देख सकते हैं कि बिफोर जो है मीटर सिस्टम, एक सेकेंड, या जो इस स्लाइड में जो पहला जो है 2018 का जो हमारा यूनिट यूज हुआ था सितंबर 2018 में, इसमें हमने सब डेटा रखा है। तो इस टाइम जो रीडिंग हुआ था यूनिट जो यूज हुए थे इलेक्ट्रिसिटी के, 6,251 यूनिट हुए थे यूज। और उस टाइम जो यूनिट पर यूनिट चार्जेस थे लगभग 7-7.5 रुपए पर यूनिट, और जो बिल भी आता था वो 60,000 के आसपास आता था। इसके बाद हमने जो है जनवरी 2001 से ये चालू किया। तो आप जो है देखेंगे तो अप टू जनवरी दिसंबर 2019 दी यूनिट 6,700 जितना आता था एवरेज यूनिट सब। तो मतलब 6,000 से ऊपर ही यूनिट सब यूज होते थे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। इसके बाद हमने जो है जनवरी 2020 से ये मीटरिंग सिस्टम चालू किया। और आप जो देखोगे जनवरी 2020 में, तो उस टाइम हमने जो लगाने के बाद जो आया, इसके बाद आप देखोगे तो 4,000 के आसपास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है वो यूज होने लगे। तो इससे फायदा एक ये हुआ कि वाटर जो है उसका भी सेव हुआ, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था उनमें भी काफी जो है वो बचाव हुआ। इसके बाद आप देखोगे तो जो फरवरी में जो आया हमारा यूनिट जो यूज हुए थे वो 4,162 थे। इसके बाद मार्च में 3,281 हुए। इसके बाद जो है वो जो समर है, मॉनसून है और विंटर है, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता था। लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो 12th मतलब दिसंबर 2020 में जो हमारा यूनिट जो यूज हुआ था इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2,600 पे आ गया। जो यूनिट हम मीटर सिस्टम लगाने के पहले
6000 से ज्यादा यूज करते थे, वो अभी आ गया 2600 आसपास। इसके बाद भी हमने जो नवंबर 2020 तक फ्री में दिया था, कोई सोसाइटी पे करती थी, कोई मेंबर से हमने जो इस टाइम हमने बिल नहीं लिया था। इसके बाद आप देखोगे तो जनवरी से 2020 से जो यूनिट आए वो काफी कम हो गए। इससे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल था जो 60,000 के ऊपर आता था, वो 25 से 30,000 के बीच में आ गया। तो 50% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में भी हमको जो है वो इसमें फायदा हुआ ये लगाने से। और ये इलेक्ट्रिसिटी में फायदा तो हुआ, अब इकोनॉमिकली गने तो फायदा पर मेंबर या सोसाइटी को तो है, लेकिन एनवायरमेंट में भी जो वाटर यूसेज था वो भी काफी कम हो गया, लगभग 50% कम हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था वो भी 50% कम हो गया। तो ये जो है, जो भी पानी में और इलेक्ट्रिसिटी में जो भी बचाव आया, वो जहां पे ये नहीं मिल रहा है वो लोग भी यूज कर सकते हैं इसका जो बचा हुआ इससे। अब आप जो सिस्टम में देखेंगे तो इसके बाद क्या हुआ कि 2020 से जब ने हमें चालू किया, फिर भी पहले क्या था कि जब मीटर सिस्टम नहीं थी उस टाइम सोसाइटी में जब भी कोई प्लम्बिंग का काम हो और चालू रहता था तो सोसाइटी जो है वो सब रिपेयर करवाती थी। पर मेंबर के घर में जाके जो टैप चेंज करती थी, जो भी है वो चेंज करवा देते थे, वो सोसाइटी की तरफ से होता था। लेकिन जब से हमने जो मीटर लगवाया और मीटर लगाने के बाद हमको मेंबर को जाके बोलना नहीं पड़ा कि भाई आप अपना जो है वो टैप रिपेयर करवाओ, या जो अपना फ्लश जो है बंद रखो, या जो लीकेज है वो रिपेयर करवाओ। वो खुद अपने आप से ही रिपेयर करवाते गए। तो जैसे जैसे गए आप, अब रिसेंटली आप देखोगे जो हमारा 2021 का दो सॉरी अभी रिसेंटली जो हमारा बिल है 2021 से 25,000 आना चालू हो गया। और इसके बाद अब जो है હરગોન ભાઈ 10 નંબરની જે સ્લાઇડ છે ને એની અંદર છે। યસ 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 આરે આકો છો નહીં, હા બસ યસ 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 યસ। હવે આ અમારું જે છે કેલ્ક્યુલેશન છેલ્લા 11 વર્ષનું છે। 2014 માં જે અમારું યુનિટ યુઝ થતા હતા એ 6,293 યુનિટ થતા હતા, 6,293। और जो एवरेज बिल आता था उस टाइम जो था पर यूनिट 7 रुपए 70 पैसे यूनिट का रेट चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी का। और बिल हमारा आता था 48,000 उस टाइम। लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो 2015 में जो बिल आता था एवरेज पर मंथ तो 53,000 54,000 आता था। ऐसे 2017 में 46,000, 2018 में 51,000। और इस टाइम जो यूनिट का जो लास्ट कॉलम में है इसमें 7 रुपया 20 70 पैसे थे, वो बढ़ के 2019 में 8 रुपए 39, मतलब 8 रुपए 40 पैसे तक गया इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट। तो अब जो एवरेज बिल हमारा होता था वो पिछले 5 साल का वो 50,000 पर मंथ था। अब आप देखोगे 2020 में जब हमने ये जो मीटर सिस्टम चालू किया तो 50,000 जो एवरेज बिल हमारा था वो 31,000 पे आ गया 2020 में। और तब यूनिट का भाव था 7 रुपए 60 पैसे। इसके बाद आप देखो 2021 में तो जो हमारा यूनिट था वो 4,000 से कम होके पर मंथ जो है 2400 2450 आ गया। और जो बिल हमारा था 23,000 आ गया। और उस टाइम जो यूनिट का भाव था पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का वो भी 9 रुपए 75 पैसे, मतलब पौने 10 रुपए हो गए। फिर भी हमारा बिल जो है 23,000 24,000 ही आया और हमारा यूनिट भी कम जो है हुआ। अब आप लास्ट में देखोगे 2024 में जो लास्ट ईयर था तो हमारा एवरेज पर मंथ जो यूनिट यूज हुआ वो 2600 हुआ और हमारा जो बिल है वो 27,000 है। हमारा बिल बढ़ा क्योंकि अभी पर यूनिट जो चार्ज हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को वो 10 रुपए 60 पैसे दे रहे हैं। इसीलिए जो यूसेज कम हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा बिल हुआ वो क्या है कि यूनिट का भाव बढ़ा, इसके लिए हमारा इससे हमारा बिल थोड़ा बढ़ा। अदरवाइज जो है ये मीटर सिस्टम से
काफी जो है 50% से भी कम हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आने लगा। पानी में भी काफी जो है वो बचाव हुआ। और इसके बाद जो है अ, अच्छी बात तो ये हुई कि जो लोग जो यूज नहीं कर रहे थे, जो भी फ्लैट्स या यूनिट बंद थे, उनको जो मेंटेनेंस के हिसाब से पर ईयर 8 से 10 हजार रुपया जो देना पड़ता था इसका, वो भी कम होके मिनिमम 2400 रुपया आ गया। ये जो कैसे मीटरिंग सिस्टम हमने लागू करवाई, कैसे हमने जो सब आगे किया, इसका पूरा जो है वो हरगोविंद भाई आपको डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत किया था सोसाइटी में ये सब लगाने के लिए। तो मैं हरगोविंद भाई को बोलूंगा कि ये जो है ना सब सिस्टम हरगोविंद भाई आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू तुलसी भाई, खूब सरस रीते खूब अच्छे से आपने वो जो क्या प्राइस या इन टर्म्स ऑफ रुपीज में कैसे वो होता है, वो कम हुआ है, वो सारी चीजें बताई। मैं थोड़ा प्रोसेस स्टेप पे थोड़ा बहुत आपको ले जाऊंगा। बेसिकली ये जो हम लोग जो तुलसी भाई काफी यंग, और हमारी सोसाइटी में थोड़ा ऐसे हुआ कि भाई कुछ यंग लोगों को थोड़ा जिम्मा दिया गया। तो हम लोग जब रात में जाते थे, रात को 1 बजे 1:30 बजे, तो काफी ड्रेन्स जो पहले ऊपर से फ्लैट से नीचे तक वो कान लगा करके सुनते थे, तो पूरा मतलब पानी चलता ही था। तो उस टाइम तो क्या होता कि रात को 1 बजे 2 बजे तो किसी के घर पे जाकर के नॉक नहीं कर सकते, लेकिन पानी जाता था। मैंने तो वीडियो भी लिए, वो सारी चीजें की। फिर दूसरे दिन सबको हम लोग दिखा देते कि भाई आप 4 लोगों में से किसी के एक घर, क्योंकि एक रो में 4 लोग 4 घर थे, तो इसको दिखाते थे कि आप में से कोई एक घर में किसी का चालू है। तो वो सब एक दूसरे के ऊपर कि भाई हमारा तो नहीं चालू, क्योंकि 4 का एक लाइन होता है, लेकिन कोई तो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सेंसिटाइजेशन वो प्रोसेस वो उस हिसाब से चालू हुआ। फिर मैंने घर पे हर एक घर पे जाकर के सभी के टैप चेक किए, तो पता चला कि बहुत सारा ड्रेन मतलब वहां दिख रहा है। आप देखोगे तो एवरेज एक एक फ्लैट में 12 टैप है, 12, क्योंकि 2 बाथरूम है और गैलरी किचन, वो सभी में गिनते हैं तो 12 टैप है। और उसी सभी का मैंने कैलकुलेशन किया था, और उसमें सभी दोस्तों की मेहनत मदद ली थी, कमिटी मेंबर्स की। तो कुल मिलाकर के टॉयलेट में 19 जो थे टैप्स वो लीकेज मिले थे, जो सबसे ज्यादा थे। जो जो पानी का ड्रेन होता था वो सबसे ज्यादा, जो देखो ये 13 जो 13 जो है, ये 13 लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब वो ड्रेन होता था। फिर तो इस डेटा के आधार पे हमको वो भी पता चला कि किसके घर पे वो किसका घर, जब मैंने वो यूनिट के हिसाब से वो बिल निकालना हम लोगों ने शुरू किया, तब पता चला कि जो ड्रेन वाले जो ये 13 वाले जो है ना, जिसका लगातार ड्रेन होते थे, उसका ही बिल आज भी ज्यादा आ रहे हैं, आज की डेट पे भी। तो ये पता चला कि भाई कौन कैसे वो डिसिप्लिन में रहते हैं। बाकी सब जगह पे कुल मिलाकर के 69 टैप्स जे थे, जिसमें से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप या तो कोई थोड़ा सा हल्का सा पानी चलता जा रहा है, और कुछ चीजों में 24 टैप ऐसे थे कि जिसमें से एक रिचर ड्रेन होता था पानी। तो जो ड्रेन वाला है बहुत सारा पानी इनमें से निकल जाता था। हम लोगों ने ये स्टडी किया 2019 में, और जो इंस्टॉलेशन शुरू किया था 20 में। लेकिन उसके पहले भी थोड़ा एक R&D किया था कि हमारे ट्यूबवेल जो है, तो ट्यूबवेल कितना चलता है। तो ट्यूबवेल करीबन करीबन पूरे दिन में शुरुआत में 19 घंटा चलता था, फिर थोड़ा स्लो हुआ 16 घंटा, देन 14 घंटा चलता था। ऐसा एक डेटा हमको मिल रहा था। तो ये सब सारी चीजों से पता चलता था कि अब इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। आपने ये देख ये ट्रेंड देखो, क्योंकि मैं जब वो ये ट्रेंड को देखता, तो मेरा जो रूरल कम्युनिटी के साथ काम करने का जो अनुभव और जो अर्बन कम्युनिटी का जो बिहेवियर मुझे समझ में आया इस डेटा के हिसाब से। डेटा में प्रेजेंट नहीं करूंगा, लेकिन उसमें बिहेवियर में प्रेजेंट करूंगा। देखो यहाँ बिफोर मीटरिंग जो है करीबन 6,500 से ऊपर यूनिट जलता था, ये ट्यूबवेल का ही है। और जब हम लोगों ने इस टाइम पे सब कुछ किया,
ट्रेनिंग किया, मीटिंग किया, बहुत सारा किया मैंने, नोटिस भी आप देखोगे तो इस प्रकार का पूरा जो R&D किया था, तो पूरा हर एक सोसाइटी पे जाकर के हम लोगों ने इस प्रकार का नोटिस दिया था। नोटिस नहीं, मतलब ये तो एक मटेरियल दिया था कि भाई ऐसा हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो, तो हमारे जो खर्चा है कम से कम आधा हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने सेंसिटाइजेशन के लिए किया था। लेकिन कुछ भी इसके बाद AGM 19 में हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया, फिर भी देखो दिसंबर या जनवरी तक 6000 से कुछ कभी भी कम नहीं हुआ है। आप कुछ भी कर लो, मैं अब रिलेट करूं कम्युनिटी को, रूरल कम्युनिटी को, तो मेरा ये अनुभव है कि कोई भी चीज को लेकर रूरल कम्युनिटी में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ा सेंसिटाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तो वो कम्युनिटी कुछ ना कुछ मानती है और थोड़ा बहुत उस पे एक्शन में आती। लेकिन यहाँ इतना करने के बावजूद भी बहुत इतना फर्क नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ इंस्टॉलेशन किया 20 में, जनवरी 20 में शुरू किया और नवंबर तक हम लोगों ने कभी भी बिल नहीं दिया है। लेकिन अब लगना शुरू हुआ कि भी इंस्टॉलेशन हो जाएगा, अब तो मीटर हो जाएगा, तो तुरंत फर्क शुरू हो गया। 6000 से 4000 तक में आ गए। और उसके बाद जैसे भी हम लोगों ने मीटर बिलिंग शुरू किया, क्योंकि नवंबर तक हम लोगों ने बिलिंग नहीं किया था, तो 4280 जलते थे। जैसे ही नवंबर से शुरू किया, तुरंत 2500-2600 आ गया। तो ये थोड़ा बिहेवियर है कि जो कम्युनिटी कुछ इस प्रकार से, जिसके पैसा के साथ जिसका लेना देना ज्यादा हो, तो वो इस हिसाब से मानती। तो उसमें मैं इसलिए हर बार कहता हूं कि मीटरिंग ही एक सॉल्यूशन है अर्बन कम्युनिटी में, और कुछ चीजें वो लागू पड़ती है रूरल कम्युनिटी में भी। अभी ये पैसे की चीज है, इसमें पैसे में रिफ्लेक्शन है, वो उन्हें मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों ने किया। इसका कैलकुलेशन कैसे किया? हाँ जी, हाँ जी, श्योर। થોડુંક મારે જલ્દી કરાવવું પડશે કારણ કે यस, यस, વિજયભાઈને નીકળવું एकदम છે। कंप्लीट। હા, बस अब हमारे ओके, यस, यस। और उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने ये किया कि पर मंथ कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था और कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल हो गए थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के यूनिट हमारे पास थे, और उसका बिल था। तो यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना बिल आया, उससे डिवाइडेड बाय कंज्यूम यूनिट को डिवाइड किया, तो 11 रुपीज आया था उसका खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हम लोगों ने 2 रुपया मेंटेनेंस का लगाया और 1 रुपया मिसलेनियस करके ये जिम में हम लोगों ने बोला कि 14 रुपया, वो 14 रुपीज पर यूनिट रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोग बिल करते हैं। तो ये सारी चीजें है। एक जो थोड़ा बहुत इसमें से जो मुझे समझ में आया, ये थोड़ा हम लोगों ने एनालिसिस करके रखा कि आउट ऑफ 96 फ्लैट, इनमें 53% जो है वाटर यूजेस, वो 22 परिवार करते हैं, 22 फैमिलीज जो 53% वाटर यूजेस करते हैं, और जो 74 जो फैमिलीज है वो 47% यूज करते हैं। तो फिर ये यहाँ फोकस हम लोगों ने शुरू किया, तो 53 पे, तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम शुरू होने लगा। जो बेस्ट पार्ट जो रहा थोड़ा बहुत प्रोसेस वाला, ये रहा कि सोसाइटी की तरफ से काफी सपोर्ट मिला इनोवेशन में, एनवायरमेंट में। कभी ऐसा नहीं बोला कि भी जो क्वालिटी का काम है तो आप, हाँ, क्वालिटी काम है तो आप पैसे से देखिए। सोसाइटी में 100% मेंटेनेंस का कलेक्शन आता है, तो वो भी हमारे लिए काफी बढ़िया रहता है कि भी उसमें कोई वो नहीं है। और आफ्टर मीटरिंग भी बहुत सारे लोगों ने उसका बिल कम आने का, मैं उसका 2 एग्जांपल दूंगा, बाद में दूंगा, लेकिन वो काफी लोग अपने आप सॉल्यूशन ढूंढने लगे कि भी कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। जो चैलेंजेस, जो मेजर चैलेंजेस वो थी कि एग्जिस्टिंग जो हमारी सिस्टम थी, वो टेक्निकल कंस्ट्रक्शन का जो काम था, वो थोड़ा मीटरिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत उसको मैच करना बहुत मुश्किल था। तो वो टेक्निकली थोड़ा शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी अच्छा सा जो प्लम्बर्स मिल गया था, तो हमको हमारा काम हो गया। नहीं तो वो सबसे बड़ा चेंज होता है। थोड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन होता है कि भाई यदि वाटर मीटर लग जाएंगे तो हमारे पे कंट्रोल आ जाएगा।
वाटर ये हम लोगों ने कतई नहीं बोला कि वाटर मीटर लगेंगे तो आपके वाटर यूजेज में हम लोग कंट्रोल करेंगे। आपको जितना भी यूज करना करो, कोई दिक्कत नहीं, वाटर मीटर से जो बिल आएगा वो आपको भरना होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा ह्यूमन बियर आज भी देखता है, जब भी बिलिंग देते हैं तो लोग पड़ोस का कंपेयर कर लेते हैं कि तुम्हारा 5,000 आया, मेरा 10,000 आ गया, क्यों? लेकिन मैं वो बोलता हूँ कि वो आप उसका कंपेयर बिल मत करो, उसका जो हैबिट्स जो कंपेयर करो, वो किस तरीके से पानी के साथ बिहेव करता है और आपका बिहेवियर कैसा है, वो जोड़ेंगे तब जाकर के पता चलेगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बहुत लंबा चलेगा, लेकिन मैं यहाँ उसका जिक्र नहीं करता, बहुत कम कम बात, हमारे पास टाइम है। और एक चैलेंज वो था कि सब ऑनररी लोग होते हैं सोसाइटी में, सेक्रेटरी, चेयरमैन, तो उसके लिए बिलिंग, बार बार बिलिंग, कलेक्शन, वो सारी चीजें, वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो ये थोड़ा ये सारी चीजें आती है। एक दो जो चीजें हैं, जो बेस्ट पार्ट, जो बेस्ट प्रैक्टिस का मैं करना चाहता हूं कि फ्लश टैंक जो इंस्टॉलेशन है जो टॉयलेट में, वो उसके कारण कुछ केस स्टडी अच्छे मिले हैं, जिसका बिल 12,000 रुपये आते थे, सिर्फ और सिर्फ फ्लश टैंक लगाने से 6,000 रुपये आ गए। तो मतलब मैं तो ये फ्लश टैंक लगाने से बहुत सारा काम हो सकता है। और कुछ चीजें ऐसी कि लोग आरओ का वाटर यूज करते हैं, बहुत मेरा पानी बिल कम आएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम, मेरा मेरा मानना ये है कि जो लीकेजेस है और जो फ्लश टैंक है, वो सबसे दो मेजर जो चीजें हैं, वो उसमें ये पानी के बेड ज्यादा वेस्ट के लिए वो जिम्मेवार है, तो उस पर काम होना है, हो सकता है तो बढ़िया बात रहेगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Haragovin bhai and Tulsi bhai. Excellent, very, very good case study. We slight changes in the scheduling. So Pavan bhai, I was going to put you in now, but this, if you can allow Vijay bhai has Yes, to yes, leave yes, of for course, it. of course. No, please go ahead. Yes, Yeah. yes. So Vijay bhai, please, tamaru presentation. Hello. Yes, thank you. Good evening of all. हमारा जो एक थोड़ा टाइम शेड्यूल शिफ्ट हुआ है, तो वन रिक्वेस्ट है कि विल कंप्लीट द प्रेजेंटेशन विद इन 10 to 15 मिनट, जस्ट गॉन थ्रू द जल संचय मिशन प्रेजेंटेशन। Perfect. Thank you so much, Vijay bhai. Vijay bhai is with Ahmedabad Municipal Corporation. નું CV આપેલું છે. Please go ahead. सर, वो जल संचय मिशन का जो स्कीम है, उसमें पेज नंबर 5 वो ओपन कीजिए। Presentation. We have already said a presentation, so request to open Chitrakshi, presentation. Chitrakshi, can you open the presentation? We'll explain in brief. अपना जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया है, कैच द रेन। Chitrakshi, can you share the presentation? Yes, sir. Yeah. And then move to the 5th slide directly. विजय भाई चालू रखो। सर, आप बोले चल अब अपने प्रेजेंटेशन के जरिए जो लोग अभी ऑनलाइन है, सबको मैं एक अंदाज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से संदेशा छोड़ना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एक स्कीम आया हुआ है, कैच द वाटर, रेन वाटर। तो ये जो कैच द रेन की जो स्कीम है, वो स्कीम में अभी जो पुराना वाला, एक जैसे अहमदाबाद के लोग हैं उसको मालूम होगा कि जो सोसाइटी का काम जो होता है, उसमें हम गवर्नमेंट की स्कीम में आरसीसी रोड, वाटर लाइन और ड्रेनेज लाइन का स्कीम से पब्लिक जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट slide. Chitrakshi, next slide. नेक्स्ट હજુ આના પછી यस, Yes. बार चार्ट होगा। previous. Okay. Chitrakshi, go back a slide. This one? ખંભાતી કુવા વાળી? नो, હજુ પાછળ. આગળ. प्रीवियस वन। આ વાળી?
No. Chitrakshi, go back. Go back. Actually, Chitrakshi, go let- back. यस 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 Yeah, एग्जैक्टली। yes. Okay. तो okay. ये जो स्कीम है कैच द रेन, उसके स्कीम जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट की जो भी सोसाइटीज है, वो सोसाइटीज के अगर कोई सोसाइटी की बाउंड्री में के अंदर पर्कोलेशन वेल जो मानसून का वाटर है उसको पर्कोलेशन के लिए अगर एग्री होते हैं, तो सोसाइटी के जो मिनिमम डॉक्यूमेंट है, जो उसका बीयू परमिशन है या एक्सेप्टेशन लेटर है, जो सोसाइटी का वो जो रिजोल्यूशन करते हैं, वो डॉक्यूमेंट अगर कॉर्पोरेशन की जो वार्ड ऑफिस होती है वहां सबमिट करते हैं, अगर ही इज एग्री टू कंस्ट्रक्ट अ पर्कोलेशन वेल इन देयर सोसाइटी, तो एक स्कीम के जरिए 17% जो ग्रांट है वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर रही है। 10% टोटल कॉस्ट की जो बेयर है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करते हैं, और जो 20% है वो लोक भागीदारी की तरह से करना है। उसमें ऑप्शन ऐसा है कि अगर 20% कोई सोसाइटी बेयर करना चाहती है तो भी कर सकती है। अगर वो कोई लोकल काउंसिलर और जो एमएलए श्री होते हैं वो अगर 20% देना चाहते हैं तो फिर सोसाइटी को कोई एक्सपेंस बेयर करना नहीं है। ये काम जो है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसका अप्रूवल लेके हम पर्कोलेशन वेल का काम शुरू कर देंगे। तो जल संचय मिशन अंतर्गत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी मिशन के अंतर्गत बिफोर मानसून वी हैव प्लान टू कंस्ट्रक्ट 400 percolation well. If more application is received from societies, we'll construct more percolation well. अभी उसका टेंडर भी ऑलरेडी हमने रिसीव कर लिया और ऑलरेडी वर्क इज गोइंग ऑन एट डिफरेंट लोकेशन इन द अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट एरिया। तो आपके जरिए से एक संदेश पब्लिक के लिए भिजवाना है कि अगर कोई सोसाइटी को उसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा जल संचय मिशन अंतर्गत जो कॉर्पोरेशन 100% ग्रांट से काम कर रहे हैं, उसमें ऐसा है कि मानसून में कॉर्पोरेशन लिमिट में जहां वाटर लॉगिंग का मैक्सिमम जहां इश्यू हो रहा है, वहां कॉर्पोरेशन 100% ग्रांट से कॉर्पोरेशन की टीपी रोड या जहां सेफ्टी का कोई इश्यू ना हो ऐसी जगहों पे 100% ग्रांट से बड़ा वाला पर्कोलेशन बनाने का शुरू कर दिया है। वो हम अपने हिसाब से लोकेशन फाइनल करके करते हैं। और जो कैच द रेन वाटर के मिशन अंतर्गत हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट की मोर देन 2000 कॉर्पोरेशन की जो मिलकतें है, बिल्डिंग्स है, वहां हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा के उसका भी वो जो रेन का वाटर है उसका वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तरफ से करने का प्लानिंग है। कॉर्पोरेशन की तरफ से जो फ्लड वाला इश्यू अभी लास्ट 2 या 3 लास्ट पास हिस्ट्री में आया हुआ है, उसको फ्लड के रिलीव के लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट रखा हुआ है कि अल्टीमेटली जो वाटर रेन वाटर है वो डिस्पोजल रिवर या वाटर बॉडी में कैसे जाए। उसके जरिए हम जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट के जितने भी लेक्स है उसको डीपनिंग करने का, डेवलप करने का, और एक लेक से दूसरे लेक को इंटरलिंक करके अल्टीमेटली वाटर बॉडी में पानी जाए और वाटर लॉगिंग का इश्यू कम हो और अल्टीमेटली थ्रू द लेक वाटर पर्कोलेट हो जाए, ऐसा हमने प्लानिंग किया है। तो मेरा ये अपना वेबिनार की ओर से पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोसाइटी में ज्यादातर ये मैसेज जाए तो पब्लिक को भी बेनिफिट मिलेगा, अपने सिटीजन को जो मानसून में वाटर लॉगिंग का जो इश्यू होता है वो भी बेनिफिट मिलेगा, और बारिश का पानी है वो जमीन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी बनेगा। हमारा एक मीटिंग शेड्यूल ऑलरेडी हुआ है, तो एक रिक्वेस्ट है, वी अवर टीम आर लिव फॉर दैट। If any query or any question, please mail us. We will review and send back to all of you. Thank you. Thank you, વિજયભાઈ. Thank you. તમારે નીકળવાનું છે. ઘણા Yes. પ્રશ્ન આવી રહ્યા છે પણ એ પછી હું તમને ઈમેલ થ્રુ Sure. મોકલી દઈશ. Yeah. Sure. Yeah. Thank you, Vijay સાહેબ. Thank you very Okay, much. thank you. સમય કાઢીને આવવા માટે. Thank you. Thank you. Okay, thank you. અને પછી હું આપને મળવા આવીશ આના આગળ. Sure, definitely. હા? Sure. જરૂર. Yeah. We can now. કાકા બોલ્યા તો Sorry. We can now move to Pavan bhai. Yes. Okay. Will you share your presentation, or should we ask Chitrakshi to do that? No, but this presentation on the screen has to Yeah, first this- go. I've already started sharing mine, but I don't know, it got probably blocked. Hold on.
First of all, a very good evening to all of the participants, my fellow panelists, and the audience. And thank you, INHAF, for giving me this opportunity to present my views. Some of them may be a little strong, but this is a subject which really, I'm passionate about, even in my personal life and my personal attitude and behavior with water. So I believe that the Third World War is going to be, there's a high probability that the First World War will be about water. So I've called this presentation really a war for water. And I think unless we declare a permanent a state of permanent emergency, we will not be able to overcome this challenge. The world's population is still increasing, and it will for the foreseeable future. Right now, we are approximately about 8.5 billion people on the planet. Before the population starts going down, we will hit about 11 or so billion people on the planet. And there is just not enough water for more than 40 or 50% of that population to live in a dignified manner. So there are two parts of the problem. I think we have this urban issue, which some of my previous panelists have discussed, and then we have a rural issue. Okay, because there is scope for water saving, water metering, and harvesting in all these areas. So if we come to the urban area, water metering, like the members of Haragovin Bhai and Tulsi Bhai of the Somai Members Association, they've already presented in exhaustive detail. This is a great solution. It fosters user consciousness and user awareness. User consciousness in the sense of not only about the amount of water being used, but also awareness in terms of if there is a leakage, then you see a spike in your water metering, and then you fix that. So it also makes you aware of leakages. Some leakages are apparent. I mean, if you see a leaking faucet or a leaking flush, then you see that. But many other leakages are underground in terms of leaking pipes. So I think water metering systems have also evolved, and you can pinpoint with a great deal of accuracy of where this actual leakage is happening with the use of smart meters. There has to be a carrot and stick treatment. Bonus points could be issued for reducing water consumption, and this, as I said, a water pressure sensor could also detect leakages. Also, it can be combined with water metering, and also it, transparency. So if there is at a city-wide level, if we include water pressure systems and metering systems, and then we have a dashboard, then at the city level, the concerned officials would be able to see where the leakages are. It's like a metro network. You see the trains moving, but here you see water flows and leakages. Kirti, you need to mute yourself. So, I think that at a city level, the local authorities probably, may want to look at and should be looking at. And transparency, all this should be made available on the concerned websites, so that citizens also are aware of how much this collectively owned resource, what is a collectively, like air is a collectively owned resource. It doesn't belong to one single individual or to the government or to a local authority like the panchayat or the municipal corporation or a municipality. It belongs to all of us. So that is, I like to say that what is collectively owned is also collectively disowned. Nobody gives a damn because it's collectively owned. So I think we need to fix that attitudinal problem. Cost of water metering is of course very high at a society level, but Vijay Bhai has already presented how that circle, how that circle can be squared, how we can square that circle. So with a contribution from the government, from the local authority, from the corporators, and from the society itself, it can be fixed. The other thing is like smart metering for electricity in California and other progressive states in the US have done many years ago over the last few decades.
there's a state utility, the electricity company installs a meter, they don't charge the occupant, but for the installation and for the cost of the meter itself. But whatever energy savings are there, they split, so everybody's happy. The electricity company gets its pound of flesh. They earn more money than than just the charging, the charges for the smart meter and for the installation cost. Something like that also could be looked at. That the water savings that the Sumai Members Association presented, if the municipal corporation installs that meter, then whatever savings have happened in the electricity bill could be shared between the municipal corporation and the society. And because the corporation, in this case, Torrent Electricity Company, if you take the case of Ahmedabad, they maintain exhaustive records. They're online, so there is all this can be automated. The amount of savings can be figured out online. We don't have to have any manual process because it's already like the presentation showed from Sumai Members Association. This data is available with Torrent, in a digital format. The political will has to be there because, as I also mentioned, water is a fundamental right, and it's perceived. It's not really free, but it is perceived to be free. What we are actually doing is borrowing from future generations, right? What we are consuming now, and many of us who are parents even don't realize when we waste water that we are actually borrowing from our future generations, from our progeny, from our children, grandchildren, great-grandchildren. So we are actually making their life less dignified, but we just don't think beyond our noses and beyond our immediate selves. So I think that kind of awareness needs to be there, that really it's not a free resource. You are borrowing it from your children, grandchildren, great-grandchildren, future generations. So if you are leaving them an inheritance, leave them an inheritance which also includes water, apart from your house or shares or ornaments or any other inheritance that you might think of leaving them. The rural aspect is also significant. One, its incentives should be there because a lot of because water is free, we really don't give a thought about growing water hungry crops. So many of our crops are not suitable for dry regions like central and northern Gujarat, and yet we grow them because we are supplied water through Narmada canal system, and that is free, or through underground pumps, tube wells, which is again, we are not really paying for the cost of the water, only for the electricity which draws out the water. And for agriculture, even that is not metered. Farmers only pay on a per horsepower basis. So irrespective of how much electricity they are consuming or water they are drawing, it's a based on the horsepower that is connected. The pump's horsepower. So that's a challenge. This can be, the acreage dedicated to water hungry crops or to other crops can be monitored through the use of satellite images or through drones. So it's all automated. There is no human intervention. So there's huge amount of transparency and process are very simple and in real time. So this and the other thing is that right now agriculturists don't pay income tax, but if they grow water hungry crops, which again can be monitored, and this data can be made available to the income tax department, it's all automated. They lose that much. If they planned 30% of their total land holding on water hungry crops, then 30% of their income should be liable to tax. Then the subsidies on these kind of crops which are water hungry should be eliminated, the fertilizer subsidy and the seed subsidy. Then incentives should also be given. Subsidy for less water hungry crops should be increased, and likewise for enhancing the variety of crops, because again this will have an added advantage, a flip benefit of reducing crops lost through pests. If there's a wide variety of crops grown, and this can be suggested to the use of artificial intelligence algorithms, that if this kind of crop acreage is planted in this taluk or this district, then the susceptibility of this crop
or the entire crop ensemble, different crops will be much less than a single or a dual crop system for that particular taluk or district. Then most of all, I think it is equity. As I pointed out, water is not actually free because we are borrowing it from future generations who will be the real sufferers, and they will have to pay a huge amount. So, and that too, the poor are the worst affected because the middle class and rich are consuming at the expense of the poor, and they're consuming more than their fair share. So it's not a proportionate consumption. Assuming that water is a fundamental right, okay, then let all of us consume proportionately. So but just because I'm middle class or rich, I should not be consuming more than my fair share of the available water. So the poor are the worst affected, not only because the rich and the middle income are consuming more than their fair share, but also because they can afford to pay for water tankers if at all such a case or scenario comes forth in the future. And I want to say a great, thank you again to INHAF and to all of you for patiently listening to me. And I will, be really interested in the Q&A session. And also, I'm sure a lot of the audience also has great ideas of how to, solve this issue, this burning issue. So thank you very, very much, and have a nice evening. Thank you very much, Pavan bhai. Very, very good overview, and really a call to action in terms of war about water. So in a way, it fits in very well with the next speaker, which is Lokendra bhai. And Lokendra bhai was actually given an award in 2022 as one of the water warriors, the top 10 water warriors of this country. And he's an architect, what we call an urban ecologist. He is a founder of an organization called Tree Walks. And I think tree and water are both his passions because he works on trees and then he works on water. He's done a lot of work on groundwater recharge to more than 100 Khambati kuas and a lot of water harvesting structures. He also trains urban local bodies on water management, etc. So over to you, Lokendra bhai. Thank you, Apoorva bhai. I hope I'm clear, audible. I'll start with my slideshow. Yeah, please. And we'll quickly go ahead. I'll just tell what we do. We run an activity called Tree Walks for past 12 years, where on the second Saturday, we go to a green area. We take people, we talk about ecology, we talk about trees. Essentially, we try to reconnect with nature. That's what we do. तो थोड़ी पेड़ों की बात करते हैं, थोड़े उनके नाम बताते हैं, थोड़ी कुछ चिड़ियों की बात करते हैं, थोड़ी मिट्टी की बात करते हैं। और ये 12 साल से कर रहे हैं, हर महीने के दूसरे शनिवार को सवेरे 8 से 9:30। तो दिस हैज बीन हैपनिंग कंटिन्यूली। आज पानी की बात कर रहे हैं। पानी जो प्रकृति वाला पानी है, और पता नहीं जब काम करने लगे तब ऐसा लगा कि पानी को हमने बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग पहलू से देखा है। पानी का एक टोटलिटी, एक पूरा जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं खो गया उसमें। हमें कितना पानी चाहिए, हम कितना बिगाड़ रहे हैं, हमें कहाँ से मिलेगा, कितना लेके आ रहे हैं, वो सब जरूरी है, ना नहीं है, बट उसमें कुछ पहलू जो खो गए थे उसकी बातें करते हैं, उसके बारे में मैं काम करता हूँ। और उसको एक रीजनरेटिव वाटर इकोलॉजी बोलता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी नहीं, हमें रीजनरेशन चाहिए। बिकॉज सस्टेनेबिलिटी तो 1970 का कॉन्सेप्ट है, जब एनवायरनमेंट एक कुछ अच्छे लेवल पे था, अभी तो बहुत बुरे हाल है। तो हमें एनवायरनमेंट को रीजनरेट करना है, तो उसमें वाटर इकोलॉजी को रीजनरेट करना है, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो मैं बहुत क्विकली ये सब बातें करने वाला हूँ आज। बहुत सारा मटेरियल है लेकिन मैं बहुत क्विकली कर रहा हूँ। पानी को, बारिश को देखने का तरीका बदल गया है। मूवीज में हीरो हीरोइन पेड़ के पीछे बारिश में भीगते हुए अब गाना नहीं गाते। स्कूलों में बारिश की पोएम नहीं होती है। और अगर आप इंटरनेट पे रेनफॉल, रेनी सीजन को अगर गूगल करोगे तो फर्स्ट 15 फोटोग्राफ शहर के फ्लडिंग के बारे में है। बारिश को एक बहुत ही नेगेटिव शायद तरीके से दिखा जाने लगा है, बिकॉज हम उसका पूरा रोमांस भूल गए हैं। और बारिश
और पानी इन सबको भी चाहिए, केवल हमें नहीं चाहिए। मेंढक, हमारी कुछ स्टडीज बता रहे हैं, अगर मेंढक और ये ड्रैगन फ्लाई दोनों शहरों में काफी होते तो शायद हमें फॉगिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज ड्रैगन फ्लाई उड़ते हुए भी 100 मच्छर को खा जाता है। जब उसका निम्फ होता है पानी में तो वो 150 मच्छर के लार्वा को रोज खाता है। मेंढक तो हम सब जानते हैं मच्छरों को खाते हैं। ये बाकी सारे जानवर, इन सब का एक इकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक इकोसिस्टम है जिसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग इन सब की काफी बातें करते हैं। और छिछला पानी जिसमें पौधे उगे हुए हो, वो बहुत जरूरी है एक एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी के लिए। शहरों में पानी चला गया है, खत्म हो गया है। ऐसा छिछला पानी तो कहीं नहीं, अगर पानी बनाते तो स्विमिंग पूल जैसा बनाते हैं। और उसके कारण हमारा जो एक एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी है, जिसमें अलग अलग तरह के पौधे, जानवर, पंछी हैं, वो सब धीरे धीरे कम हो गए। और उसको वापस लाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। ट्री वॉक्स में ऑलमोस्ट 750 फैमिलीज हैं जुड़ी हुई है। उन सबको हम ये बातें बताते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इतना कीजिए प्लीज, और वो कर भी रहे हैं। हम जो तालाब डिजाइन करते हैं, तालाब के किनारे हम शैलोज बनाते हैं। शैलोज बनाने से 2-3 फायदे हैं। पौधे उगते हैं, पंछी लोग वहां बैठ सकते हैं, और इंसान जब सुसाइड करने के लिए जंप करते हैं तो डूबते नहीं है। बहुत सिंपल लॉजिक है, बट इट इज वर्किंग। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये वापी के पास हमने 15 साल पहले 4.5 एकड़ का लेक रीडेवलप किया था। पब्लिक लेक था जो पूरा मिट्टी से भर गया था, उसको पूरा रीडेवलप किया। 15 साल हो गए, इसमें आज भी एल्गे वगैरह नहीं है, आज भी पानी साफ है। आज भी इसमें हमें कोई अब तक सुसाइड के प्रॉब्लम का न्यूज़ नहीं मिला है। और ये बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है। बीच में एक आइलैंड भी रखा था जानवरों के लिए, बहुत सारे पौधे लगाए थे, एक्वेटिक प्लांट्स लगाए थे। एंड दिस लेक इज वर्किंग फैंटास्टिकली। 15 साल हो गए। मैं एंड में इसका एक फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा जहाँ पे ये लेक बहुत, आज भी बहुत क्लीन है, आज भी बहुत हेल्दी है। हम लोग कुछ बहुत अलग तरह के काम करते हैं। जैसे ये जो आपको पॉट दिख रहा है, ये मधुमक्खियों के लिए, पानी के लिए पॉट रखते हैं हम लोग हमारे टेरेस में, बालकनी में। पृथ्वी पे सबसे इंपॉर्टेंट जीव में मधुमक्खियों को गिना जा रहा है। बिकॉज 75 से 80% हमारा जो खाना है, जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, वो बीज के कारण क्रॉस पॉलिनेट होके बन रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो वाक्य तो सबको याद ही होगा, जहां कहते हैं 20 चली गई तो 4 साल में इंसान चले जाएंगे। बट बीज का होना बहुत जरूरी है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो और पानी है नहीं शहरों में, तो हम इस तरह से पॉट्स बनाए हैं, लोगों को दिए हैं। एंड लोग अपने घर में रख रहे हैं ताकि गीला कपड़ा हो जिस पर से बी आके पानी पी के जाती है। दूसरा, हम कहते हैं कि पानी को गंदा ना करें, उसको पॉल्यूशन नहीं करें। जो यमुना का झगड़ा चल रहा था दिल्ली में, उसके बारे में हम कहते हैं अगर नदियों को साफ करना है तो हमारे घर से सफाई चालू करनी पड़ेगी। हमारे घर से जितने टॉक्सिक केमिकल्स, साबुन वगैरह हम इसमें डालते हैं, उसके कारण जो नदियों का पानी, उसमें हाई टॉक्सिसिटी के हिसाब से माइक्रोबियल एक्शन कम हो रही है। माइक्रोबियल एक्शन कम होने से पानी का क्लीन होना कम हो गया। तो हम इस तरह के सॉल्यूशन बताते हैं। ये बायो एंजाइम है जो फ्रूट्स के छिलकों से बनता है। इससे पोछे का काम बहुत अच्छा होता है, बाथरूम बहुत अच्छे धुलते हैं, और बहुत सारे दूसरे छोटे मोटे यूज होते हैं। तो साबुन और जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स हैं, उसका यूज काफी कम हो जाता है। हम ऐसा नहीं कहते कि 100% ऑल्टरनेटिव है, बट बहुत कम हो जाता है। और बायो एंजाइम एक्चुअली लेक्स को क्लीन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बायो एंजाइम बनाते हैं लोग बाग घर में। अरीठा यूज करने का बोलते हैं, नेचुरल सोप है ये। हैंड वॉश, बॉडी वॉश के लिए बहुत अच्छा है। स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है, इससे कपड़े भी बहुत अच्छे धुलते हैं। और ये भी हम लोग काफी उगा रहे हैं। तो हर साल अहमदाबाद में 150 जितने अरीठा के पेड़ उगाए जाते हैं ट्री वॉक्स की तरफ से, ताकि अरीठा ज्यादा उगे, ज्यादा लोग इस्तेमाल करें। तो पानी को एक बहुत अलग तरीके से, एक बहुत अलग अप्रोच से हम लोग हैंडल कर रहे हैं। और उसके बहुत अलग अलग जो पहलू है पानी के, उन सब पहलुओं पे हम लोग
लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अहमदाबाद की शायद पॉपुलेशन 75 लाख जितनी होगी, पूरे गुजरात की कुछ 6 करोड़ जितनी होगी, भारत की तो हम सब जानते हैं। अगर लोग बाग इसमें एक्टिवली काम करें तो शायद इकोलॉजिकल और वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम काफी कम हो जाएंगे। तो हम लोग लोगों पे काम करते हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। एक हमारी ये एक्सपीरियंस, हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है रेन गार्डन्स का। हम कहते हैं कि मिट्टी पे भी काम करो, सॉइल इकोलॉजी पे। जो एसडीजीज हैं, 17 एसडीजी हैं, उसमें ऑलमोस्ट 8 एसडीजी आर सॉइल डिपेंडेंट। एंड यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि हम सॉइल के जो हमारे टारगेट्स हैं हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, सॉइल इंप्रूवमेंट के। हमने जो अहमदाबाद में काम किया है लोगों के साथ, उसमें सॉइल के बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट, अब उस पर तो रिसर्च भी हम कर रहे हैं, जहाँ पे एवरी ईयर सॉइल के लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स किए जाएंगे उसके ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ज्यादा है, माइक्रोबियल एक्शन ज्यादा है, उसमें टॉक्सिसिटी कम है, तो सॉइल अपने आप बहुत ज्यादा पानी को पर्कुलेट करती है, सॉइल सॉफ्ट रहती है। तो ये हम लोग बहुत आसानी से करते हैं। एक अमृत जल है जो अपूर्व भाई भी जानते हैं, जिसके बारे में, जो गाय के गोबर और गौमूत्र को फर्मेंट करके बनाया जाता है। अहमदाबाद में कम से कम 5 गौशाला वाले ऐसे हैं जो लोगों को फ्रेश गोबर और गौमूत्र दे रहे हैं अभी, और लोग उनसे खरीद रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक अलग तरह का काम हो रहा है, जिसमें लोगों के घर की मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो रही है। मेरे घर पे बड़े बड़े पॉट से 21 इंच के, आप उस पे आधा बाल्टी भी पानी डालेंगे तो वो प्रोबेबली कुछ सेकंड्स में सारा पानी उतर जाता है। बिकॉज लास्ट 8 साल से हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं। तो बहुत किसानों से भी बात हुई है, उनके खेत में भी जो पानी भरता था वो बहुत जल्दी अंदर उतर रहा है। तो और इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बहुत अच्छा हो रहा है, सॉइल को बार बार जो पानी देने की जरूरत है वो भी कम हो रही है। एक अलग, इससे अलग एक दूसरा काम कर रहे हैं, हम बोलते हैं स्वच्छ पानी नहीं, स्वस्थ पानी चाहिए। पानी हेल्दी चाहिए, क्लीन नहीं। अब तक हम क्लीन पानी पे सोच रहे थे, और क्लीन पानी इन बोतलों से तो बहुत पिया, आरओ फिल्टर से भी बहुत पिया, और हमें रियलाइज हुआ कि इसके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ गए हैं। बी कुछ डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ्स और डॉक्टर्स कहते हैं कि B12, D3 और काफी मिनरल्स की कमी आरओ के साफ पानी के कारण हुई है। तो वी शुड स्टार्ट हैविंग रेन वाटर। पानी, बारिश का पानी बचाना इतना आसान है। तो ये जब दिखा के लोगों को करते, तो एटलीस्ट अहमदाबाद में लास्ट ईयर हमने ये कैंपेन स्टार्ट की, कम से कम 20 फैमिलीज पूरा बारिश का पानी भर के पी रही है पूरे साल तक। सो दैट्स द चेंज वी हैव सीन। एंड उसके साथ में हमने ग्राउंड वाटर पे बहुत काम किया। साइंटिफिक सर्वेज ये कहते हैं, कुछ डेटा ये कहता है कि सरफेस पे जो पानी है, यमुना, नर्मदा, गंगा, जो भी सारी नदियां गिन लें, जो तालाब गिन लें, उससे जमीन के नीचे 30 गुना या 100 गुना पानी ज्यादा है। लोकेंद्र भाई, 5 minutes? Sorry? 5 more minutes? Yeah, I have my stopwatch on. Yeah. So हम बोले कि इसको भर लेते हैं ना, वापस रिचार्ज करते हैं एक्वीफर्स को। तो हमने रूफ टॉप रेन वाटर के इस तरह से सिस्टम बनाने चालू के लास्ट 3 साल से। अहमदाबाद की 22 सोसाइटी में बन चुके हैं, और लाखों लीटर पानी एग्जिस्टिंग बोरवेल में डालते हैं, जो सप्लाई ट्यूबवेल है। एक ट्यूबवेल अप्रोक्सीमेटली 25,000 लीटर्स पानी एक आवर में पी जाता है, और एक मॉनसून सीजन में अराउंड 20 से 30 लाख लीटर पानी पी जाएगा। तो हम कहते हैं दूसरा बोर बनाने की क्या जरूरत है, जो एग्जिस्टिंग बोर है उसी में कीजिए। ये मैपल काउंटी 2 का है, अभी मेरी सोसाइटी ने भी किया है। हम लोग हर मॉनसून में अराउंड 18-19 लाख लीटर पानी उतारेंगे। खंबाती कुआ हम लास्ट 7 साल से प्रमोट कर रहे हैं। लास्ट 3-4 साल में कम से कम 100 खंबाती कुएं अहमदाबाद में बने, और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि इस साल एएमसी ने 40 खंबाती कुएं का कॉन्ट्रैक्ट दिया है बनाने के लिए, जो विजय भाई कह रहे थे कि उनकी कुछ कुछ जगह में वो लोग बना रहे हैं। ये खंबाती कुआं फर्स्ट ईयर में 75,000 लीटर्स एवरी आवर पी जाता है।
और बहुत अच्छा रिचार्जिंग करता है। इन सब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे, ये जो काम हुआ है। नंदन बाग की ये बात है जहाँ पे 1700 टीडीएस था 2021 में, आज वहां पे कुछ 125 का टीडीएस है। जो पानी वहां पे 350 400 फुट पे मिल रहा था, आज 23 फीट पे है, बिकॉज उनके 8 खब्बाती कुएं बने हैं। ये जो स्कूल है एशिया इंग्लिश स्कूल, यहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े वहां पे 2 फुट पानी भर जाता था, आज वहां पे बिल्कुल पानी नहीं भरता। ये हर साल मॉनसून में 6-7 छुट्टियां देते थे, आज बिल्कुल छुट्टी नहीं देते हैं। ये वो वापी वाली लेक है जो मैं कह रहा था, बिल्कुल क्लीन है 15 साल बाद भी। आप देख सकते हैं कोई एल्गी की नामो निशान नहीं है। तो थैंक यू सो मच, दिस इज व्हाट वी बीन वर्किंग ऑन। इच्छा है कि पानी को हम सब और समझें, उसको किसी और तरह से मल्टीपल लेवल्स पे उसके साथ काम करें। तो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। Lokendra bhai, excellent, very, very good presentation. You covered the ecological aspect, the economic aspect, the livelihood aspect. Absolutely brilliant. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Dr. Mercy? Yeah. So, let me just briefly introduce you. I think they will be putting up your introduction, but Dr. Mercy Samuel, she's a senior associate professor at CEPT University in the urban management program, right? And she is very passionate about the circular economy, about waste management, about urban governance, and he's done a lot of work. She's been part of many committees. She's done a lot of consultancy work also, and she's recently written a book on transforming waste management. So overall, a very passionate advocate for the circular economy and water conservation. Over to you. So can you see my slide, Apoorva bhai? Yeah, we can see that. Okay, thank you. So thank you, Kirti bhai, for inviting me for this session. And it's indeed a very rich panel. I don't know if I'll be able to do justice, but I wanted to talk about water conservation from a very behavioral approach, as many other panelists have talked. And I've recently written a case study along with Utsav and taking data from wherever he has installed his water meters. So it is about disincentive leading to incentive. So जैसे हम वाटर कंजर्वेशन को या मीटर्स की बात करते हैं तो हमें एकदम ऐसा लगता है कि जो चीज फ्री है वो अभी चार्ज होने वाली है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बनेगा। तो हम लोगों ने जो केस स्टडीज किया है उसमें हमको ये समझ में आया है कि ये नुकसान नहीं, ये फायदे की बात है। फायदे की बात शॉर्ट टर्म में भी है और लॉन्ग टर्म में भी है। शॉर्ट टर्म में ऐसा फायदा है कि हमारे पॉकेट से खर्चा कम होएगा, और लॉन्ग टर्म में ये फायदा है कि इस इंटेंशन से कि हमारा खर्चा कम होगा, हम हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ अच्छा पानी छोड़ के जाएंगे। सो अर्बनाइजेशन, अपन सबको पता है कि हमारे शहरों में बहुत लोग आके रह रहे हैं, बहुत सारे शहर बन रहे हैं, बहुत सारे शहर बड़े हो रहे हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों में आके रह रहे हैं तो पानी की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा है। जब तक नल में पानी आता है तब तक हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही नल में पानी बंद हो जाता है तब हमको उसका वैल्यू समझ में आता है। इसलिए जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग ज्यादा शहरों में आके रह रहे हैं, उससे से पानी की बहुत ज्यादा जरूरत भी होती जा रही है। और उसी के साथ में ही हम, क्योंकि प्राइस नहीं है, उस पर कोई पैसा नहीं देना है इलेक्ट्रिसिटी की तरह, इसलिए हम उसको वेस्ट भी करते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे घरों में, सोसाइटीज में पानी से हम हमारे पूरे वरांडा धोते हैं, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हम पानी से पूरा फुल फोर्स में होस पाइप से धोते हैं, जहां पोछा लग सकता है वहां हम धोते हैं, राइट। सो लेजिटिमेट कंजम्पशन नहीं हो रहा है और वेस्टेज हो रहा है, और ज्यादा प्रॉब्लम पानी की वेस्टेज की है। पानी अभी अबुंडेंस में है और आने वाले टाइम में ऐसा ही स्पीड रहा तो शायद नहीं रह जाएगा, लेकिन अगर हम हमारा वेस्टेज कर्व करने की कोशिश करेंगे तो हम काफी कुछ इसको मैनेज कर पाएंगे। सो मेरे हिसाब से ये एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम है वेस्टेज को रिड्यूस करने का। अभी गुजरात में हाई राइज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स का पॉलिसी अनाउंस हुआ है, जहां पे 100 मीटर हाई रेजिडेंशियल टावर्स बना सकते हैं जो 70 फ्लोर्स तक जा सकते हैं। तो म्युनिसिपैलिटी का जो पानी यहाँ पे सप्लाई होगा वो डेफिनेटली इन हाई राइज
टावर्स के लिए काफी नहीं होगा, और अभी भी नहीं है। तो कई सोसाइटीज में, लगभग सब सोसाइटीज में बोरवेल्स हैं, और वो एक पर्टिकुलर एक्वेफर से पानी ड्रॉ करते हैं, इसलिए उस एक्वेफर पे प्रेशर पड़ता है। तो जैसे जैसे जितना जितना पानी ड्रॉ करते हैं उतना हम देखते हैं कि समर में हम ज्यादा नीचे जाते जाते हैं। सो हमारे बोरवेल की डेप्थ बढ़ती जाती है, और उस तरह से हमारा पानी का क्वालिटी भी खराब होता जाता है। सो जैसे ही समर आता है, वाटर के टैंकर्स मंगाने लगते हैं, हम बोरवेल और डीप में जाते हैं। इस तरीके का हम हमारा रिएक्टिव मेजर्स लेके आते हैं एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सो ये एक बहुत बड़ा एक बिहेवियरल इशू है। तो रिसोर्सेज जो कि इनएक्सपेंसिव हैं वो ओवर यूज होते हैं और मिसमैनेज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंजर्वेशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिटरमिन नहीं किया हुआ है शुरुआत से ही, इसलिए हम उसको पे व्हाट यू यूज वाला जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो नहीं करते हैं, और काफी रेजिस्टेंस में आ जाते हैं जैसे ही कोई पानी पे प्राइस करने की बात करता है। जबकि हम बाहर घरों से जाते हैं तब हम मिनरल वाटर की बॉटल खरीद लेते हैं, राइट। बट वो कितनी एक्सपेंसिव होती है बनस्पत की, अगर हम हमारा खुद का कंजम्पशन रेगुलेट करें तो वो काफी अच्छे से अलाइन हो सकता है वाटर यूसेज के फॉर्म में। सो ये एक मेंटल सिचुएशन बन गया है, एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बन गया है कि हमें इसको अबुंडेंटली यूज करना है। अगर हमको कुछ चेक करना है तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज कि हमें इसको पहले मेजर करना पड़ेगा। जब तक हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं तब तक हम इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो हम सब बातें तो बहुत करते हैं कि हमें पानी बचत करनी चाहिए, सब लोग बातें करते हैं, लेकिन जब हम मेजर करने लगेंगे कि हम कितना यूज कर रहे हैं, उसके बाद ही उसका मैनेजमेंट का अप्रोच स्टार्ट होता है। तो व्हाट गेट मेजर्ड विल ओनली गेट मैनेज्ड। सो इसका पूरा इंसेंटिव कैसे बनेगा, डिसइंसेंटिव जो अपेरेंटली दिखता है वो इंसेंटिव कैसे बनेगा? तो जैसे हरगोविंद जी ने बताया था और तुलसी भाई ने बताया था, हमने और दूसरे अपार्टमेंट्स का स्टडी भी किया था, उसका एक केस स्टडी है। ये 80 अपार्टमेंट्स का स्टडी है जहां पे एनुअल मेंटेनेंस फीस 14,400 पर ओनर एंड अराउंड 16,000 रुपीज टेनेंट्स को चार्ज करते थे 2018 में। इनका कंटिन्यूअस प्रॉब्लम ये था कि मेंटेनेंस चार्ज बढ़ता जा रहा था, सोसाइटी में कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं था, और लोग काफी एजिटेटेड थे कि मेंटेनेंस चार्ज बढ़ रहा है, जिसके ऊपर इन्होंने एनालिसिस किया और इनको समझ में आया कि बहुत ज्यादा बिजली का बिल जो कॉमन एमिनिटीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, बिजली का बिल बहुत ज्यादा वहां से आ रहा है, और विच इज एडिंग टू द मेंटेनेंस चार्जेस। अब उसका फर्दर एनालिसिस हुआ तो समझ में आया कि ज्यादा बिजली का बिल जो है वो बोरवेल चलता है। पहले 8 घंटे चलता था, फिर 10 घंटे, फिर 14 घंटे, ऐसे 16 घंटे तक बोरवेल चलता था। मतलब कि पानी नीचे से पंप हो रहा है, बोरवेल से निकल रहा है अंडरग्राउंड वाटर टैंक में, एंड देन ओवरहेड वाटर टैंक में जा रहा है। तो देवर गोइंग अराउंड स्काउटिंग कि हम इसको कैसे कर्ब कर सकते हैं, और तब इनकी मुलाकात एक वाटर मीटर कंपनी से हुई और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इनिशिएट करने का सोचा। बहुत रेजिस्टेंस था लोगों में, लोग नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स किए, कुछ कैलकुलेशंस किए, और उन्होंने एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट रन किया जिसमें इनिशियल पीरियड में उन्होंने कोई चार्जेस नहीं किए, बट मेजर किया कि लोग कितना पानी यूज करते हैं। तो वो मेजरमेंट से पता चला कि एवरेज कंजम्पशन पर डे वाज समथिंग अराउंड 97,000 लीटर्स, और बिजली का बिल जो एवरेज बिल पर मंथ आ रहा था वो लगभग 47,000 रुपीज आ रहा था। फिर उन्होंने केस सिनेरियो 2 किया जहां पर कि उनका मीटर इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही बिलिंग स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि वो यूसेज उसका कम हुआ है। मतलब कि लोगों को समझ में आने लगा कि सबके घर बिल्स आने लगे, तो उनको समझ में आने लगा कि इतना वो यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत शुरुआती चीज है कि हमें पता चले कि हम कितना यूज कर रहे हैं। उसके बाद लोग उसको थोड़ा सा वेस्टेज कम करना सोचेंगे, उसको रिड्यूस करना सोचेंगे, वो सब सेकंड स्टेज है। सो ऐसे ही थर्ड सिनेरियो में आए वो लोग, जहां उन्होंने देखा कि एक बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है
कंजम्पशन 72,000 लीटर्स हो गया है पर डे, और बिजली का बिल भी कम हो गया है, 16,900 रुपीज जैसा बिल हो गया है। सो ये एक केस स्टडी था जिसमें कि उन लोगों ने काफी अपना बिजली का बिल कम कर दिया, और ये बिजली का बिल कम होने से सोसाइटी के लोगों के ऊपर मेंटेनेंस चार्ज का बर्डन भी कम होने लगा। उन्होंने मेंटेनेंस चार्ज को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक मेंटेनेंस चार्ज था और एक आपका वाटर का चार्ज था। वाटर का चार्ज आपके हाथ में है, आप जितना यूज करोगे उतना ही पे करोगे। आपके घर में 2 मेंबर्स हैं तो आप उतना ही पे करोगे, 5 मेंबर है तो उतना पे करोगे। जब आप घर में नहीं हो, आप समर वेकेशन पे गए हुए हो या कहीं भी वेकेशन पे गए हुए हो, घर बंद है, तब उसका पेमेंट नहीं करना है, तो फ्री राइडर का प्रॉब्लम भी उसमें सॉल्व हो गया और मेंटेनेंस चार्जेस कम हो गए, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग हो गई। और जो चीज पहले उनको डिसइंसेंटिव लग रही थी, अब लोगों को इंसेंटिव लगने लगी। तो ये चीज मेजर हुई, इसके लिए लोगों को समझ में आया और उन्होंने इस चीज को फर्दर सपोर्ट किया, और आज भी वहां पे ये मीटर बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। अब अगर इसके ऊपर हम एक सोलार सिस्टम और लगा देते हैं तो वो सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल और कम हो जाएगा और वो अपनी सोसाइटी के लिए और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो एक 63% रिडक्शन उन लोगों का टोटल बिजली के बिल में हुआ। अगर हम सोचें कि इस इनिशिएटिव को हम एक पूरे शहर में या स्टेट में या कंट्री लेवल पे अगर हम लेके जाते हैं तो हम कितना पानी बचा पाएंगे, हम कितना कम वेस्ट करेंगे, हम कितने अवेयर हो जाएंगे, और हम लोगों का पानी का जो प्रॉब्लम होता है वो काफी लेवल तक सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, ये बेसिकली एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए अपने अर्बन वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज में। ज्यादातर अभी क्या हो रहा है कि पॉलिसी इनकोहेरेंस होता है, क्योंकि लोग पहले सोलर सिस्टम लगा देते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि सोलर इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ इट, तो वो दबा के अपना पंपिंग सिस्टम चालू करते हैं, तो पॉलिसी इनकोहेरेंस सेटअप हो जाता है। तो इस तरीके का एक सिनेरियो ना हो, इसलिए पहले एफिशिएंसी डेवलप करने के बाद में उस सिस्टम को फर्दर एफिशिएंट करने के इनिशिएटिव्स होने चाहिए। So I think this is all from my side. Thank you so much. I think it gave us a much, you drew out lessons beyond that case study. So I think that was very useful, very nice. Utsav bhai? Yes, sir. Good evening. Yeah. So Utsav bhai is with ADM Meters LLP. He's a business development executive there. He's also an expert on water resource management and strategic policy, etc. And ADM is, I think, one of the leading companies in water submetering. So, Utsav bhai, please. Yeah, sir. Just I'm trying to share my presentation. 1 second. Yeah. Is it visible, sir? Now? Yeah, perfect. Right. So good evening to all. And first of all, I'd like to thank you, Mr. Apoorva ji, and especially to Mr. Kirti ji, जिन्होंने मुझे ये chance दिया to speak up on the subject of saving water. And to start with, I would like to share a very good experience that I had recently with Kirti ji. So he asked me a simple question, कि we want to talk on saving water, and water meter is such a simple instrument. Still, why it is not being implemented? And I said I can help you discuss on the challenges that we are facing as an industry and what we are trying to solve with water meters. So I'll just quickly go through with the subject of water meters and different types. What are the challenges in the Indian market for the acceptance of water meters, and how we can solve them or address them. So I'm sure all of you have already discussed a lot on water. So we'll quickly go through what is a water meter. So it's a device that uses certain mechanisms to measure the amount of water that you use in a household, industry, or at an individual level. Uses of water meter, it's helpful for leak detections, for cost management. It helps you to reduce and manage your consumption. So types of water meters. So there are a lot of water meters. I'll just quickly brief you about them. So normally the awareness in terms of metering is not there in Indian market from what I see. And because of that, we actually do not know that where we should use which meter.
So say, for example, there are mechanical meters. So they also have certain types like positive displacement meters for low flow rates, turbine meters for high flow applications, multi-jet water meters and single jet water meters, which are specifically designed for residentials and mass communities. Then there are electromagnetic water meters, which are used for specific applications in industrial water systems and municipalities where large consumptions of water is being measured. And then the latest ultrasonic water meters that are used in smart cities for real-time data monitoring and so on. So quickly now I'll come to concept of sub-metering. So this is basically the idea that we at ADM Meters are promoting. Sub-metering refers to the installation of individual water meters in each building, house, or a complex or an industrial facility. So when I talk about metering, so metering is at a society level, from what I understand, which is from a utility से corporation या कोई private utility company जहाँ से आप पानी ले रहे हैं और a source of water से bore. And when I talk about sub meters, it is just like an electric meter or a gas meter which you install at your house and you pay for what you use. It's just that you are paying for water. That's it. So sub metering, you can see a photo which is installed in a society. So it helps you understand your measurement or your consumption in terms of what you are using, which Mercy ma'am just highlighted. So these are some photos of the concept of sub metering which have been implemented in private societies, in rural areas, across Gujarat, across India. So just to give you a quick understanding, normally what happens is that we have common plumbing systems for water. But in this case, as you can see in the first photograph, there is a common header, a bigger pipe from which there are various outlets being drawn with meters installed. And these outlets, they run in the parapet of the terrace, and then you can take the connections from these outlets to your household, and each household has individual water meter. So you can manage the consumption, you can manage the water usage, and the society can have a control over the consumption. All right. So the main topic that I would like to discuss is the challenges that we are facing or the metering industry is facing to implement sub-metering in Indian market. So the first point, of course, is the non-standard quality of water. The quality of water, say it is groundwater or corporation water or lake water. Certain places the TDS is very high. Certain places like Rajkot, they have fine sand coming in the bore water. Certain places there are chemical compositions coming in water. So due to variations in the quality of water, the functionality of meter is limited, and thus the acceptance of a society or an individual is limited because they have this concern that what if the meter stops because of the quality of water. A second point is again non-acceptance towards water meter, which was already highlighted by a couple of fellow members. Misconceptions regarding that it will, increase their monthly payments or say maintenance, resistance to change because they have not been paying for water till date as it was a free resource until now. And also there are certain GST norms that make sub-metering a difficult project for a lot of people because of the cost associated with that. Not to mention lack of enforcement because we do not have stringent policies and norms that mandate metering to make sure that water is being used wisely. As I was talking about the policies, there's no nationwide uniform policy on metering as on date. If there are policies in certain areas or state-wise, they are not enforced as it should be. There are a lot of areas where there are discretions in terms of the local governing bodies. There are no penalties or compliance rules for those who do not use water with meters. And of course, there are political resistance as water has always been a free resource. Apart from that, there are people who wish to install water meters, like as Haragovin ji was telling that they actively thought on installing water meters because they thought that this would solve their project, solve their purpose.
but they faced a big challenge that was in terms of plumbing challenge, from what I understand, because the initial plumbing was not designed to incorporate a meter. Now, when a household has, say, multiple इनलेट्स ऑफ वाटर, या एक से ज्यादा पानी अगर घर में आ रहा है कहीं जगह से, तो उनके लिए एक घर में 2 या 3 मीटर या मल्टीपल मीटर्स लगाना पॉसिबल नहीं है. सो वी नीड टू हैव अ सिंगल इनलेट प्लम्बिंग डिजाइन एज पर अ सर्टेन पॉलिसी और अ मैंडेट, जिसकी वजह से मीटरिंग करना इजी हो जाए सोसाइटीज के लिए. सो that deals with the whole design and plumbing challenges which is present, because every builder, every society, every each and every bungalows, they have different pipe sizes, they have different designs, everybody has different scenarios, so it becomes difficult to incorporate and standardize this. So this is just a concept. You can see the photo that there is a common line that goes from top to the bottom, and everybody gets water from that. And there are multiple common lines for each and household. So it becomes difficult to install water meters in such a case. Apart from that, if all above problems are solved, then comes the problem of inferior quality of water meters in India because lack of awareness. So it causes inaccurate readings, the lifespan is short, and this all problems leads to, again, non-acceptance of water meters, because at a society level, if I talk, तो जैसे हरगोविंद जी है, तो उनके लिए बिगेस्ट चैलेंज was कि ये डालने के बाद अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट इफ इट बैकफायर्स, तो मीटर बिगड़ जाएगा तो कहाँ जाएंगे, पानी अगर सेव नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, कॉस्ट कम नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे. सो आई थिंक देयर शुड बी नॉर्म्स इन प्लेस टू हैव गुड क्वालिटी मीटर्स, आई थिंक. Also, there are a lot of standards, which is the point number 6. So if you see for water meters, there are ISO, there is BIS, there is MID, there are several MID standards for cold water meter, hot water meter, smart meter, and all of them have different scenarios for manufacturing, implementing, installing. So I think there should be a specific standard as well to make sure that people are not confused as to what to use, what not to use. So how, as an industry, can we address this challenge? I think we should onboard the government bodies, we should onboard the architects, consultants, and have awareness in terms of single inlet plumbing so that metering can be made sure. Developers can start this campaign of, having meters in their societies so that members, when they come to reside there, they can have this concept कि पहले से पानी metered ही रहेगा, it's not a free resource. There should be robust policy to incorporate metering in building code or BU, I guess, from Niti Aayog, and we are ready to help them in formulating one if it's possible, and also formulating a single standard to have good quality water meters across India. I think there are very good schemes currently, as Mr. Vijay mentioned, regarding rainwater harvesting, regarding Jal Jeevan Mission, Har Ghar Jal Yojana going on across the nation. And I think Har Ghar ab water metered hoga, ya something like that could also be a yojana for future that can help India measure water and then manage water, and then maybe we can shift to sustainability or even net zero. I would like to present some case study in line with Mercy ma'am also. So I'll just quickly shift to the chart here. So apart from the society that ma'am mentioned, we happen to collect some other societies data, including SUMI members, which we've already discussed. So I'll just give you a quick analysis that out of the 4 societies, if you can see the last 2 columns, one is the water savings in liters per month, and one is the percentage of water conservation, right? And you can see it's almost 25, 26, 27, 45%. So minimum 20% is saving in the water. And if you can see, there's equivalent saving in the electricity. If I just put a total for these 4 societies for a month, it's about 50 lakh of liters being saved per month between 4 societies after metering. If this is implemented, as ma'am mentioned, across a city level or a nation level, I think we will not have the scarcity, or even we can try to go towards the net zero. So this is from my side. And I would also like to add one more thing. Apart from all this, water meters have a very good advantage in terms of, I can say, green building concept, because water meters, they help you save 2 things. One is the water and one is the electricity. And I think both of them, when we talk about electricity, you can convert that to carbon
footprint carbon offset, and water, you can convert them to water credits. So in the long run, it can help a society, a industry, a corporation at a very large scale. So this is from my side. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So very, very good presentation and very good overview of meters and metering. I think we've now come to the end of all our presentations from other speakers. If there are people who would like to ask questions, we can do a short Q&A. We don't have too much time. We have 20 minutes. And then, Kirtibhai, if you would like to sort of summarize and look at the way ahead. So questions, Chitrakshi, if there are any questions from the chat box or from the questions or people right now who would like to ask questions. I see that there's a lot of chat box, there's a lot of work, discussion already happening. So somebody's asking about the cost, etc. And I think that answers are being given. Are there any other questions from the audience? Sir, sir, can I allow them to speak? Yes, please allow them. Yes. Anybody would like to ask a question? So there is one question from Nafisa Barot. Yeah. What about installing meters in existing? Is Nafisa there? Maybe she can ask it herself. Or has she left? Yeah, yes, sir, she is there. Nafisa, if you can just ask the question. Yes, the last presentation was that, if you have multiple water points, then it's difficult to install water meter. So what happens, because then there's such a large number of families and society where you cannot, and it's only we are talking about more in future in terms of what can be done. So my question is, so what do we do with the existing multi point in the house? I don't know who'd like to take this question, Haragovin or Utsav. I think Utsav, if you are there. Yeah, I'll take it. So hello, ma'am. Basically, there are two things to your question from what I understand. One is the existing scenario, the societies where there are multiple inlets of water, and still if a society wishes to be installing water meters, right? So in this case, there are two options. The ideal options that I mentioned earlier is to have the replumbing done from the terrace to the household, which definitely has a cost associated and is a difficult option. But it ensures that you have 1 meter for one household and the society can manage that in a longer run. The other option, which is quick and easy, is to have multiple meters installed each house, but then it is a very tedious task to take readings of different meters for each household and then note it down and then make the whole data sheet and then bill it every month, because there are multiple meters installed in each household. Not to mention, you do not have the control with that, because say if a certain house is closed for a month, you cannot go and take the reading there. The society has that limitations. But if you go with the whole replumbing to be done, that way the control can be with you. So yes, it has a cost associated. Yes, it is a difficult project, but it is manageable. Just as Mr. Haragovin mentioned, and a couple of other data that I've shared, there are 100+ societies itself in Ahmedabad who have done this and who have got very good results. Okay, thank you. Thank you. Anyone else? So Sachin Oza wants to ask a question. Please. Yeah, my question was that, everybody has talked about the process of awareness creation, because that is the most difficult part. So I just wanted to understand from the 4 societies or from the Haragovin Bhai, because it took them from 2005 to 2019 to ultimately, pass a resolution. It's a very tedious task.
if they can throw light, because I'm also a committee member in my society, and I find it very difficult to even approach this subject, let alone do anything about it. So I would like to understand from him, I mean, what did they actually do and to sustain this? Haragovin, you're muted. સચિનભાઈ, હું એવી સોસાયટીઓને પણ જોઈ છે કે જે સોસાયટીઓમાં ઓલરેડી મીટર લાગેલા છે, પણ they don't execute with billing. બિલ નથી કરતા, કારણ કે એ ટાસ્ક એવો છે કે જેમાં જે મેનેજમેન્ટ છે એના માટે થોડું વધારે છે. એટલે આ એક સેન્સિટાઇઝેશનનો વિષય છે, છતાં એની સાથે થોડું મેનેજરિયલ એટલે સોસાયટીના જે એક્ઝિક્યુટિવ્સ છે અથવા જે સોસાયટી મેનેજમેન્ટ છે એના પોતાના રસનો વિષય છે. સોસાયટી એને કેવી રીતે લેવા માંગે છે એ ઘણા બધા બીજા પાસાઓ મને લાગે છે કે બેને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો નફી સાહેબે, મને કન્સ્ટ્રક્શનનો પ્રોબ્લેમ કરતા આ પ્રોબ્લેમ્સ વધારે લાગે છે કે સોસાયટી કરવા ધારે તો પછી બધું થઈ શકે છે, એમાં કોઈ જ પેલું નથી. અમને લોકોને એવું લાગે. યસ, But Haragovin, the issue is that એટલે આપણી પાસે એવા કેસ સ્ટડી છે કે બેબી તમારી સોસાયટીમાં લેટ્સ સે વધારે વાર લાગે, પણ are there societies which have been able to do it in a faster period of time? કારણ કે કમિટી મેમ્બરનું પીરિયડ 2 વર્ષ 3 વર્ષ હોય. હવે એમાં જો ના થાય તો પછી then એ આગળ વધી જાય. એટલે is there, આપણે maybe Mercy will know, other examples where it is done, where relatively lesser time society has been motivated or convinced, and what are the tools which help in that education and awareness? Yeah, so Apoorva bhai, so any innovation or any new mechanism takes time to build up its presence. तो जो वाटर मीटरिंग का जो सब मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट था, अब क्या है कि देर आर 100+ सोसाइटीज जहाँ पे ये सब काम हो चुका है और लोगों ने ये देख लिया है कि ये एडवांटेजेस है. केस स्टडीज लिखी हैं जिससे समझ में आ रहा है कि मेंटेनेंस बिल कम हो जाता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. तो सोसाइटीज जो चेयरमैन है, मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स हैं, वो इन स्टडीज को लेके एक अच्छा कम्युनिकेशन मटेरियल बना के अगर शेयर करें अपने एजीएम में, तो आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड इट क्विकली. जो पहले बहुत लंबा टाइम लगा लोगों को समझने में, अब यूज केसेस हैं जिसमें एडवांटेज दिख रहा है, बेनिफिट दिख रहा है. ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, बस समझने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. तो अच्छे से कम्युनिकेट करें तो लोगों को ये फटाफट समझ में आएगा. और फिर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि हम इसको हाउ डू वी गो अबाउट इट, मल्टीपल प्लम्बिंग, हम कुछ अपना फंड निकालें और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें कि कितने टाइम में रिकवर होगा, वो सब सेकेंडरी स्टेज है. बट प्राइमरीली अब शायद लोगों को कन्विंस करना ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि ये इस तरीके की केस स्टडीज आ गई हैं मार्केट में. Sir, I would also like to add one more point to Mr. Sachin's query. For a society, I think it is a very important decision when it comes to a revenue model at a society level. And I think in long run, if a committee puts this project as a long run revenue model, as a recurring cost of revenue generation for the society, yet decreasing the cost of electricity and saving water, I think people will definitely agree. And this is a win-win situation for the members, reducing the maintenance, as well as a revenue model for the committee. And it doesn't care who the committee members are. If after the 5 years also down the line, the meters, if they function well, they can always generate revenue. So it's a good option. Apoorva, can I add to that a little bit? Yeah, please. Yeah. See, what I personally feel listening to all these presentations, I feel there are good examples there, successful case studies, which need to be publicized. I think what is very important is that we use whatever platform, whether social media or newspaper or whatever. And I think these good case studies, good examples need to be publicized for unknown societies across the country to read them, start thinking on them, and probably approach people who have done it and learn from them. So replicability then happens. So sharing the good examples is very important with different components. We should work on that, I think.
Very good. I think Very true, very true. very true, very true. No, I think like we had exposure visits in rural areas where you see the best village. I think we'll need to have exposure visits in urban areas where you see the best functioning water managed society. And then, we can So, do that. Apurva, can I just come in for a minute Please. here? Hello? Yeah, please. Yeah, okay. No, I was, Lokendra bhai, I take your point and that in Bhimanagar, we had done in 2002 Khambati Kuwa. And I realize now that along with Khambati Kuwa, the other point which we had to really push is a water metering. So that time we were talking about using water in a conservative way, this, that. I used to always have arguments with people washing their cars and with pipes and etc etc. So I think that is also a big lesson that many societies who have done water recharging and not kind of along with it not put water metering. I think that that is something we need to learn and kind of do it now ahead. नफीसा बहन वो ये जैसे कि हम लोग वो भी सोच रिचार्जिंग वाला हमारी सोसाइटी में सोच रहे थे कि चलो उसका अल्टरनेट वो है, लेकिन जब कैलकुलेशन किया तो पता चलता है कि मेरी सोसाइटी 4000 स्क्वायर मीटर की है, एवरेज 40 इंच वर्षा यदि गिनते हैं तो मेरे ख्याल से नियर अबाउट 38 लाख लीटर जो है पूरा एक सीजन में हम लोग वो रिचार्ज कर सकते हैं यदि 100% रिचार्ज हो गया तो। लेकिन उसके सामने हम लोग वो पूरा दिन का वेस्ट वाटर गिना था तो वो पर डे का 1 लाख लीटर था, करीबन 80 हजार लीटर से 1 लाख लीटर पर डे, जो हमारे जो कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यदि मैं जो एक खंभाती कुआं करने जाऊंगा तो एक सीजन में वो 40 लाख लीटर पानी उसमें सेव होगा, लेकिन यदि जो ये मीटर लगाया तो करीबन करीबन उससे 5 से 6 गुना पानी सेव होगा। तो जो प्रायोरिटी जो अभी हम लोगों ने ये देखा कि म्युनिसिपल सरकार भी क्या रिचार्ज कुआं तरफ चल गई या तो रिचार्जिंग वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ चल गए, वो अच्छी बात है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन यदि वो इस पे जो मीटरिंग पे यदि कंट्रोल नहीं आया तो चाहे जितना भी रिचार्ज करो वो करो, लेकिन उससे कई गुना पानी इससे कई गुना Haragovin bhai, you're पानी। very right. Yeah. I mean, sorry, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि Yeah. we need multiple approaches. yes, ना? हमको what we need is multiple approaches in terms of we need to save water, we need to reuse water, and by also conserve water. Yeah, that's what I was saying. Agreed. Thank you. Kirti bhai, we are reaching the end of the session. Would you like to? બે ત્રણ વસ્તુ કહેવી હતી કે પેલા તો નફીસા બેન કેમ છે તું? હેલો, Sorry, Haji. નફીસા કેમ છે ભાઈ? But I'm fine. How are you, Kirti bhai? Good. બરાબર. No, just wanted to kind of say a couple of things very quickly. I don't think I'll take more than a few minutes. Number one is this, that there was a suggestion yesterday of Apoorva bhai when we were discussing this. There's lots of interest on this particular subject. And it will be very useful if we really organize a second webinar on the subject. So I'm really announcing it કે આપણે આ મહિનામાં ગમે ત્યારે we'll find out the logistics of it, but we'll certainly, I think, get a second webinar going in order to kind of go deeper into this whole aspect of water conservation, water aspect. And Nafisa Tara Deva Manaso, I think, should come in. This is number one. And I think we will let you know, I think, when it's possible. And as a matter of fact, we also could structure it differently. If you don't want to do it because you know my whole bias, Kirti bhai. No, if you don't want to kind of do, I think, webinar, we also could convert into some kind of, meeting. No, I'm fine with it. I'm just kind of saying that. So that is number one. And number two is this, I also wanted to announce that now that we have started a whole series of webinars, we are doing a second webinar on cities of Gujarat.
And the second one, which is taking place, is on 25th of March, and that is on the Heritage City. We are doing two webinars, and first one is on 25th. And the idea is this, and it's stunning in terms of what one is hearing. We had a declaration, UNESCO declaration, about 9 years ago of Wall City being a heritage city. And I read just 2 weeks ago, I think in a Gujarati newspaper, there were 976 foreigners who visited the heritage city. And then I found out from someone in Penang that in the same period, there were 7.6 million people who visited Penang, which is also a city. So we essentially tried to say, look, if we really have a heritage city, there's a lot to be done, and we should examine what is to be done. So this particular webinar, which is first of the two, takes place on 25th, and please participate if you're interested. Let me come back to this particular subject, and I don't know if Mercy is still there. What I'm trying to say is this. And even though Haragovin made a presentation, everyone has made a presentation, but I think what we need to point out is this. That the kind of saving we are talking about in the electricity bill is very, very dramatic. It is not a marginal change that has taken place. We were talking about a bill of 60,000 rupees, which has come down to 25,000 rupees. Which really means that everyone who's staying there essentially saving enormously. And even if you're not interested in saving the water, you're certainly interested in saving the electricity bill because it goes from your pocket. And therefore, I personally feel what is great need is this key, and I think Mercy suggested this and others suggested this. There is a great need to kind of understand this in much greater detail and develop a model, which I think what we should do is to sell to the Municipal Corporation of Ahmedabad. That and look at incentives, look at the costing, look at cost-benefit analysis, look at saving in terms of water, look at saving in terms of electricity, and look at in the whole context of climate change. And therefore, what one is saying is this, that this is not something we should really allow to bypass as a small little experiment that happened. This is a very dramatic experiment. And this, not only, I think, float it, in terms of information and writing letters and articles and all that. I'm saying we need to work on this whole idea and trying to sell this idea to the system. And I think it's something we should examine possibility. Like, say, for instance, I was thinking, and Apoorva, I don't know whether you know this, but like, say, we were studying Pradhan Mantri Awas Yojana, under which 12 million houses have been built. It's a very good program. I think, it understands the supply side, it understands the demand side. But we also found out that if you really kind of look at the ground, 350 square foot house could be much better designed than it is. And in the process, we organized a national competition of improving livability of small houses. 4 seasons are over. 5th season is taking place next month. And we had something like 300 competitors participating and generating ideas. What I'm trying to say is, why can't we really kind of organize a competition in terms of improving water consumption in Ahmedabad city? And I think younger people could participate, and the professionals could participate, and as a matter of fact, people like Utsav could help designing this. If you're talking about system which is not correct, we could talk about retrofitting the system and work out the cost of retrofittation. And I personally feel maybe as they do a calculation in case of solar system, you'll find out that the repayment period is just 4.5 years or 5 years is worth doing it. And therefore, one has to got to look into the whole economics of developmental action. And I personally feel as a follow-up of this particular webinar, we will be very happy, INHAF will be very happy to participate, pay for it, I think, get people together
but let us take it further. Because this idea is something that we shouldn't really end with this particular meeting. Because the reason that we are seeing are very dramatic. And if you're talking about, I think, wars around water, and if you're talking about, I think cities, I think, getting bankrupt in the process of water consumption, this is a huge area. And I think leads that are coming through are very interesting. So what I suggest is this, that let us, and I'll be very happy to take initiative in terms of do a small little 1/2 page note in terms of how do we go about doing it. But let us work on follow-up to this idea. Whether it's a second follow-up meeting or not, it's a secondary. What is very important is this, that there are some very important ideas which emerged. And there are some very capable people in this particular meeting, who are part of this. Be that Utsav Bhai, do that Mercy Ji, the Haragovin Saab, be that Lokendra Bhai. We have some brilliant people. And I'm saying, let us take it further. And in any case, as a matter of fact, even though we blame him, but you see, Vijay Bhai, before he left, he talked about incentive scheme. I think, kuo banao, and tamne atla paisa apishu 70%. We essentially have to kind of develop similar system of incentives which government can take up. I know કે હું શ્યામલમાં રહું છું ને એવું કંઈક છે કે તમે 20% આપો તો સરકાર મ્યુનિસિપાલિટી 80% આપે અને તમે તમારા કોન્ક્રીટના રોડ બનાવો. There's a scheme like that. So what I'm trying to say is examine this whole possibility and do it. And Utsav Bhai and Lokendra Saab and Haragovin Bhai, let us get together and do this. It's doable. Sir, I'd like to add one point. Evidence is very compelling. It is not a marginal saving you're talking about. You're talking about a major saving. And લોકોને ફાયદો જ છે આમાં તો. શહેરને ફાયદો છે, સમાજને ફાયદો છે, એન્વાયરમેન્ટને ફાયદો છે, લોકોને પણ ફાયદો છે. So this is win-win. And why don't you take it further? So I suggest, Apoorva Bhai, and I think, of course, you are the ones who are managing, I think, water and sustainability and climate change, everything put together. So let us kind of, take an initiative and work on this, and let's get together to see how do we take it further. And it's doable. It's very clear it's doable. No, I think that's true. And in fact, Lokendra, Nafisa, all of us are part of a Prava group. So we can, take this ahead. We can do that. So thank you very much. Thank everyone for this wonderful, wonderful evening. We've learned a lot. And as I said, that we are not ending it. We essentially are beginning it when we end this particular meeting. We would try and work something on this and see. I personally feel, Apoorva Bhai, if you say like 6 મહિના અંદર આપણે મ્યુનિસિપાલિટીને કશું કહેવું છે કે તમે આટલી વસ્તુ કરો. And I think it's possible. Let's examine this possibility very seriously. So thank you very much. And we will let you know when is the second webinar taking place. I have already convinced Apoorva Bhai to, I think, moderate the second one as well. And we would also, and please try and participate in the webinar that is taking place on 25th on the Heritage City. It's also an important subject. So thank you very, very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Mercy Ji. Daya Ben. Okay, good night. Lokendra, thank you. Utsav, thank you. Nafisa, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Haragovin. Yeah. Apoorva, thank you very much. Sir, thank you so much. Good night. Thank you. Lokendra ભાઈ આપણે થોડી વાત કરીએ પછી ફોન પર કાલે બે ચાર. Okay. હા. Okay.